Right. Welcome to welcome to YouTube Economics optional class for BPSC examination. In this class, we will discuss long-term log of returns, that is known as log of returns to a scale. In the short run, this is known as a law of variable proportion. In the short run, log of returns is discussed by Marshall. Law of increasing returns, law of constant returns, law of diminishing returns. This Marshallian law of returns was upgraded by different economists, Mr. John Robinson, Stigler. They have converted this Marshallian law of returns into the concept of law of variable proportion. Law of variable proportions. What is the difference? In law of returns, there are three laws. Number one, law of increasing returns. Number two, law of constant returns. Number three, law of diminishing returns. This was Marshallian version. This was classical version, neoclassical version. In classical and classical approach, Marshallian law of return is very popular. Marshall said that increasing returns is always in industry. On the other hand, diminishing return is always in agriculture. So, law of returns is related to producer's equilibrium. We have up till now studied consumer's equilibrium with the help of indifference curve. But in production equilibrium, we talk about isoquant, equal product curve. ISO means equal. So ISO product curve or equal product curve, equal product log, that is log of returns. In the Marshallian concept, there are three stages. Number one, increasing returns. Number two, diminishing returns. Number two, constant returns. Number three, diminishing returns. But modern economists do not agree, because they say that in real life, either there will be increasing returns or diminishing returns. They talk about the negative returns. So there are also three stages, but that in the discussion of law of variable proportion, we take only increasing returns, then we take diminishing returns, and then we come to negative returns. We all know that any private sector never like to go into negative returns. Which sector will go into negative returns? Government sector. Railway is under loss. Air India is under loss. 100 public sector enterprises are under loss. It means those industries under public sector are producing under law of diminishing return, which is not viable in private sector, because private firm, say the Adani, Ambani, Tata, Kirloskar, Birla, all those have one objective: profit maximization. Sometimes they may plunge into loss, but that will be temporary. They will solve it. Otherwise, they will close it. They will not keep
loss-making industry for 70 years, as in our country, say the public sector of Indian economy, most of the company, more than 100 companies are under loss. So, these are burden on the budget. This will create problem, salary payment, because salary payment, rent, electricity, many things are constant costs that will be there, whether you are under loss or profit. That is there. So, there emerged a new thing after 1991 in India, liberalization, privatization, globalization. That means liberalization means remove all those acts which are creating problem, which are taken as hindering factors. There are two types of factors, hindering factors and promoting factors. Unless you remove hindering factor, industry cannot grow fast. Therefore, under liberalization, it is suggested that all those laws which were passed during British period, which is not suitable today in our economy, that must be repealed. Repealed means end of the law. And you will surprise that present government in last 2014 to 2023, nearly 1,500 laws are abolished, which were old laws, which were creating problems, which are hindering factors in the growth of industry and leading to the loss. And therefore, in production, the main aim of the producer is to maximize production. Number one. Number two, maximize profit. Number three, minimize cost. And this in liberalization, we see that those laws must be removed, which are hindering factor. And then privatization. What is privatization for the industry? The removal of license. Privatization Government of 51% शेयर प्राइवेट के पास है. right 51%. 51% शेयर private sector and 49% public sector. जी. This is partial privatization. Nowadays it has reached to 100%. In most of the cases, new entrepreneurs are invited by 100% power given to the private industry. And it is generally related to the consumer goods. Consumer goods. It is not related to defense goods and defense instruments. These are under public sector, and in that sector, if there is liberalization for modernization and other benefits, then it will be 49 and 51% public sector owned in the country. So there are different phases of liberalization, privatization. But sequence is that first liberalize, then privatize. First liberalize, then privatize. And in privatization, you will see the result. That what would be the result? If private entrepreneurs are invited to produce iron steel. Previously, iron steel was produced by government sector. Although there was a TISCO iron steel industry established in India during British period. But thereafter, government has taken at a larger scale production iron steel in Bokaro, Bhilai, Durgapur,
taking loan from Germany, USSR, that is Russia, and then from UK, Durgapur, Bokaro. And this showed that phase-wise large-scale industries were developed by public sector. But what is the problem? Problem is technique of production is changing very fastly. You can see in case of mobile handset, every 6 months there is a new item of the same Samsung or same, which is costly. Apple. You see Apple 15 Pro, last year 14 Pro. It means every year there is a change. And most of the things are so developed inside that it substitutes a large machine which can do a simple, the highly developed mobile can do many things in business. Money transactions through mobile, it has so increased in India that foreign countries, people are very much surprised. It was said that it is not useful by previous government, Congress government. इसके पहले हुआ था, अभी हुआ, तो वही सब होगा तो बोलना, कट देता है. And lastly, law of diminishing returns. So these are the short-term laws. Our topic is returns to a scale. Returns to a scale is a long-term strategy. This is a long-term consideration. Therefore, it is known as returns to a scale. In the returns to a scale, there are 3 types of returns to a scale. Number 1 is increasing returns to a scale. Number 2, constant returns to a scale. And number 3, diminishing returns to a scale. In this analysis, only 2 factors are taken, labor and capital. L for labor and K for capital. And if we take copper glass production function to illustrate in constant return, then in copper glass production function, QA stands for production. Lambda stands for constant. What is constant? Machine is constant. Lambda may be machine, that is constant. Plant, that is constant. And then L is labor. K is capital, L is to the power alpha, and K to the power beta. Alpha and beta are known as, alpha means elasticity of the factor labor, elasticity of production of labor. Beta means elasticity of production of capital. And this alpha and beta is constant. Suppose the alpha is 25%, then beta will be 75%. If alpha is 30%, then beta will be 70%. Labor elasticity of production and capital elasticity of production, that is reflected by alpha and beta in the equation. And the last one is mu. Mu means what? Mu को अगर रखेंगे तो उसको कहेंगे स्टोकेस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन. mu को रखेंगे तो क्या कहेंगे उसको? स्टोकेस्टिक प्रोडक्शन फंक्शन. स्टोकेस्टिक का मतलब होता है अचानक घटना घट जाए, सडन रिस्क. जैसे
earthquake, जैसे सुनामी। So if certain things may happen, and you are not responsible for that. You are producing, but because of earthquake, everything turned into rubbish. Factory, machine, people damaged. Not because of the labor, not because of the capital, but because of the natural calamities. But it is not a general phenomenon. It comes suddenly. Therefore, mu is considered to be constant. Mu is considered to be constant. So, Cobb-Douglas production function in BPSC, several times it has been asked. And in interview, as it is reported, that the students were given pen to discuss Cobb-Douglas function on the board, white board. This is a new technology, so that you are really fit as an officer in Bihar to pull out Bihar from the level of Bihar state. BPSC in search of such officer which will implement projects 100% perfectly, so that 100% result will be obtained. And Bihar state will convert into developing state. So what we find out that in the long run, laws of returns are studied, and in that there is assumptions that alpha and beta is elasticity of labor and capital, elasticity of production of labor and capital. Mu is considered to be random variable that is taken as constant. What may be random disturbances? Random disturbance, just you see, internet suddenly it becomes weak and it has effect upon the video created by discussion. So this is random. How can we do it? This requires monitoring by the company which are sending this Wi-Fi. So random disturbance is also there when we are discussing. Suppose you have suddenly fire under the mines in Bihar, in Dhanbad, in Bokaro. There are many places under earth there is fire. There is a fire in coal mines, and there is no method to remove it. We have no such a thing. Somewhere, if there is a hole, again fire will come up. No one do digging in that place. So random variable is mu. Alpha beta is elasticity of factors of production, labor and capital. That how much is capacity. Suppose 30% labor elasticity, then it will be 70% by capital elasticity. And lambda is constant factor. You can put lambda as machine. You cannot change the machine. Whatever the size of the machine, that will remain same. You can have A shift, B shift, C shift. A shift कब से होगा? सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक. कितना घंटा होगा? 8 hours होगा. रात के 10 बजे से नहीं 2 बजे तक, 6 बजे से 2 बजे तक 8 घंटा हो जाएगा. तो ए शिफ्ट 10 बजे से 6 बजे से 2 बजे से 10 बजे रात तक, ये हो जाएगा बी शिफ्ट. और 10 बजे रात से फिर सुबह 6 बजे तक हो जाएगा सी शिफ्ट.
if production is going on A shift, B shift, C shift, production will be maximized and the state will develop. Here one shift is being carried on and because of sudden breakdown of electricity, work is not done. One bulb factory owner was saying that because of this up and down of electricity, his company is in loss. And nowadays, condition of electricity is moreover normal in Bihar. But when we were a student, then in every house there is a lantern, and therefore lantern is taken as a symbol in some of the bigger party. Everyone has a lantern in their house. So we will see first we will discuss increasing returns to a scale. Labor and capital on y-axis capital and beta is elasticity. Our production function is lambda L alpha K beta mu. So alpha beta is there. Look here, increasing return means this is the amount. Look here, you putting down labor, putting down capital. From there capital, labor. And isoquant we have seen in the previous class is like this one.
distance is O to A and O to B. This combination of labor and capital produces 100 unit. Now we increase labor by a smaller amount. And production units 200. It means B increased B to B1 and A to A1. This distance is smaller, but production double. जी Again, see, we have increased only slight number of isoquant 3, B2, A2 A2. Distance is very small, but production increased 100, 300. This is called increasing returns. We increase labor 10%, capital 10%, production increases 100%. Previously, we increased labor 15%, capital, and production increases by 30%, 100%, 80%. So this is laws of increased returns because capital OB is greater than BB1, which is greater than B1, B2. This is related to capital increment. Capital increment, AB more than BB1 more than, B1 B2 it means we are increasing labor and capital जी in less proportion. And production is 100 to 200, 200 to 300. So which rate is greater? Production increment rate is greater. This is called increasing returns to a scale. This is called increasing returns to a scale. Increasing returns means in coming examination, it is scheduled in December. What? yes sir If this period is fully utilized by you and you complete in the examination, what will happen? That is increased returns to scale. Previously, there was a gap of 6 months between PT and mains because of the problems inside the state, administrative problems, not conducting, possible to conduct. There are many factors related to it. Suppose election is there, then it will extend. But fortunately, your period is very, very smooth. Last year also timely examination was done and result came out. This year also it is scheduled. So you should focus your things. Choose certain questions, remember it and practice it. More and more practice. Every day, minimum 30 pages you have to practice. I have seen students who come within 100. CT is 100 for finance yes sir service. So if you want to become top 10, then 35 pages every day you have to write by your memory. That is appearing in the examination, before examination. If you will do it, you will be satisfied. Your speed will increase. Diagram speed will increase. And you will recall in a faster way. So learning by doing through practice. This is the root cause of success by large number of students I have taught in the last
50 years. Don't take it easily. At ease, you cannot, you must be serious. Every day, how many answers you practiced? This should be the also in your strategy. A strategy means what? Raniti, short term, quick result, short term, how to get success. That is called a strategy. हिंदी में रणनीति कहते हैं. So this is called increasing returns to the scale. That you increase labor and capital by less proportion, but the result is very high increase in production. That is known as, in industry there are economy and diseconomy. What is economy? Economy means managerial skill. And if the manager is inefficient and corrupt, then everything will be corrupt. Everything will be damaged. So managerial skill, technological level, marketing, sales, labor quality, all these are economies which will lead to more production. And if that is reverse, then it will be diseconomy. Then it is diseconomy. If labor strike, there will be diseconomy. If manager is corrupt, it will be diseconomy. बहुत पहले हिंदी सिनेमा में दिखाता था कि जो ओनर है किसी पर विश्वास कर रहा है मैनेजर पर. अब मैनेजर क्या कर रहा है? उसके सामान के साथ में कुछ गांजा भांग भी एक्सपोर्ट कर रहा है. पुलिस पकड़ ली. अब पकड़ ली तो पूरे कंपनी को क्या हुआ? बंद हो गया, जल गया, मालिक ही जल गया. ऐसा कहानी में दिखलाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है. हम लोग कहानी में देखते हैं कि आया और किसी व्यक्ति को मार दिया और सारा पब्लिक देख रहा है. वास्तव में मार देगा रोड पर किसी को, सारा पब्लिक देखता रहेगा. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी. या तो उससे सीखता है या स्टोरी राइटर देख के सीखता है. कोई भी आगे नहीं कूदता है, और जो आगे कूदेगा तो वो ऐसा फाइटर रहेगा. सिनेमा में ही दिखाएगा कि 20-20 को अकेले मार रहा है. रियल लाइफ में वैसा तो है नहीं. तो इसलिए पुलिस की जरूरत होती है. तुम देखोगे कोई फंक्शन है, दुर्गा पूजा है या मुहर्रम, तो पुलिस खड़ा रहता है, स्टैटिक फोर्स रहता है. उसको जाना नहीं, खाली खड़ा रहेगा. उसे खड़ा रहने से लोगों में डिसिप्लिन हो जाएगा. कुछ मोबाइल रहता है, मोबाइल पुलिस रहता है जो कि यहाँ से वहाँ जाता रहता है. लेकिन जगह जगह पर, और आजकल तो बिहार में फीमेल भी पुलिस में ऑफिसर है या इंस्पेक्टर है, मेल फीमेल दोनों बैठा हुआ है और देख रहा है. कहीं भी जाइए, कोई भी फंक्शन हो रहा है तो लोग रहता है. तो स्टैटिक का भी जरूरत होता है, खड़ा रहेगा. और मोबाइल का भी जरूरत होता है कि कहाँ आगे बढ़ के देखेगा. Therefore, in industry also, technological advancement, if your machine is outdated, obsolete, तो लाख कुछ कीजिएगा नहीं होगा. इकोनॉमिक्स में 80% नंबर उठता है. क्यों? बिकॉज नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हैं. अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीगलर को, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है. हिग्स पढ़ रहे हैं तो नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट है. उसे किताब को देखोगे इतना अच्छे तरीके से सारी बात को बताया हुआ है. लेकिन यहाँ क्या है, उस किताब को लाइब्रेरी में रखेगा ना, उसको परचेज करेगा, तब पढ़ेगा किससे? तो बिहार में देखते हैं एल.एम. राय, सुमन, पांडे, यही सब किताब है जो लोकल है, और उसमें क्वालिटी जो है वो नहीं है. और स्टूडेंट तो अबोध है. अबोध बच्चा देखिए, छोटा बच्चा, उसके सामने में मिर्चा रख दीजिए, खा जाए तो आपके विश्वास पर उठा के खा जाएगा, और खाने का तो चिल्लाने लगेगा. This showed how much faith of the youth in the older people.
यूथ का फेथ जो है ओल्डर पीपल में क्यों रहता है? वो सोचता है कि इसका सोच समझ अच्छा होगा। ऐसा बात आप बोल दिए कि पूरा इंडिया में वायरल हो गया। अब बोल रहे हैं कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या असर उसका होगा, ये सब बहुत देखने की बात है। लेबर के पास आइए तो भड़का के बोल दीजिए लेबर भाग जाएगा। कई बार सिनेमा में देखिएगा, पहले जमाना में था, प्राण नाम का था, पता नहीं अब है कि नहीं है। प्राण नाम का कोई बदमाश हीरो था, हिंदी मीडियम में था। हमको नहीं पता। हाँ, मैंने आजकल कौन है मारपीट करने वाला? आजकल मारपीट कहाँ दिखाता ऐसा कोई हीरो बोलो जो अभी है मारपीट करने वाला? है? नहीं। और पहले था, हर फिल्म में उड़ाता था और सबको डिस्टर्ब करता था। आजकल डिस्टर्ब कर देगा अगर तो आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। अब सोचिए कि बीमारू स्टेट में कौन कौन रहता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 ट्रिलियन उसका हो गया है इकोनॉमी, और वो बीमारू स्टेट से बहुत ऊपर निकल गया। मध्य प्रदेश का भी 1.5 ट्रिलियन है और वो निकल गया। बच गए हैं कौन? तो बिहार और राजस्थान। हम लोग तो लास्ट हैं। सोचिए कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यही फैक्टर है, डिस इकोनॉमीज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप फैक्ट्री खोल रहे हैं, कोई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बंद करो, नहीं तो टैक्स दो। कोई टैक्स तो सरकार को देंगे। सरकार नहीं, ये मेरे सरकार का टैक्स है, और मेरे सरकार का वही हो गया राउडी एलिमेंट। तो इससे प्राइवेट इंटरप्राइजेज भाग जाएगा। अगर उसको डिस्टर्ब कीजिएगा तो विल लीव द प्लेस। और इससे क्या हुआ कि बिहार का जो कैपिटलिस्ट है वो इंडस्ट्री लगाता है जाके गुजरात में। है कैपिटलिस्ट कहाँ का? बिहार का। बिहार में लगाता तो ज्यादा डेवलपमेंट होता बिहार का। लेकिन जान रहा है कि बहुत सारा डिस इकोनॉमी, टेक्निकल डिस इकोनॉमी। ब्रिज गिर गया, ब्रिज गिर गया, इसमें कौन डिस इकोनॉमी है? टेक्निकल डिस इकोनॉमी है। उसका ठीक से स्टडी नहीं हुआ, लोड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं हुआ, सही काम नहीं किया, तो डिस इकोनॉमी। मैनेजरियल डिस इकोनॉमी कि मैनेजर का काम है मैनेज करके पॉजिटिव रिजल्ट देना, और वही मिल गया और उसको क्वालिटी हर चीज पर लिखा रहता है। अभी देखोगी कोई भी सामान खरीद जाओ उस पर लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। अब देखोगे कि स्केच पेन से उसको परमानेंट मार्कर से एक्सपायरी डेट को मिटा दिया और नीचे लिख दिया कोई डेट। वही तुम क्या लिखे भाई, प्रिंटेड रहना चाहिए। एक्सपायरी माल तुम दे रहे हो, इट विल हर्ट पीपल, लीड टू डिजीज, बैड इफेक्ट हो सकता है। तो मैनेजरियल इकोनॉमी उल्टा हो जाएगा, मैनेजरियल डिस इकोनॉमी। मार्केटिंग इकोनॉमी उल्टा हो जाएगा, मार्केटिंग डिस इकोनॉमी। सेल्स इकोनॉमी उल्टा होगा, सेल्स डिस इकोनॉमी। लेबर इकोनॉमी को काम कर रहा है, गाना गा रहा है, कर रहा है, आज लेबर डिस इकोनॉमी आग लगा देगा फैक्ट्री में। तो प्रोडक्शन requires balance in economies and diseconomies. Economies may be technical economies, managerial economies, marketing economy, financial economy. जो स्टेट डेवलप्ड है वहां फाइनेंस लेने के लिए जाओगे, यू विल गेट फाइनेंस। यहाँ जाओगे तो कहेगा कि पहले होगा कमीशन दे दीजिए। वहां क्या है कि आपको तुरंत चला गया, आप घर नहीं पहुंचे, आपका वहां अकाउंट में चला गया, इतना फास्ट है। तो लेबर इकोनॉमी, लेबर डिस इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, मार्केटिंग डिस इकोनॉमी, एंड ऑल दिस डिस इकोनॉमी एंड ऑल दिस इकोनॉमी दोनों बैलेंसिंग फैक्टर है। इफ इकोनॉमीज आर ग्रेटर देन डिस इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, technical diseconomy, managerial diseconomy, marketing diseconomy, transport diseconomy, labor diseconomy,
it will lead to decrease in production. It will not increase. It may decrease, or if it increase, it will increase slightly. Therefore, increasing returns to a scale, change in a scale, will lead to increase in production by more than what you increase labor and capital. You increase factors of production 20%, production will increase 50%, 80%. You see the picture that the gap is decreasing, but production is increasing 100, 200, 300. This is called increasing returns to a scale. And in labor side, OA greater than OA1, A1, A2. Labor increment. डायग्राम बन गया. डायग्राम उतारिए, मिटाएंगे इसको. हो गया सर. देखते रहना. ठीक है ना. Look here, exactly same distance is taken here. Under constant return, what we see?
कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो उतना ही उसका प्रोडक्ट Labor and capital increase in the same proportion. Labor and capital increase in the same proportion each time. And what is the result? Production also increases in the same proportion. From 100 to 200, the distance is same. Again 10%, distance is same. But production also increases same, 100 to 200, 200 to 300. This is called constant returns to a scale. Under constant returns to a scale, alpha plus beta is equal to 1. The board I have written alpha plus beta. नहीं लिखा हुआ है. वो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का लिखा हुआ है. Alpha plus beta is more than 1, that is इंक्रीजिंग वो इसके पहले लिखे थे आप increasing returns. फर्स्ट टाइम. Returns to a scale word लिखना जरूरी है. Returns to a scale. Alpha plus beta is equal to 1, that is constant returns to a scale. Alpha plus beta less than 1, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल. diminishing रिटर्न्स टू स्केल. returns to a scale. Diminishing returns to a scale. So here alpha plus beta is equal to 1. Therefore, we have seen this one. Now we are seeing this one. Labor and capital are increased, say 10% each time. Production will also increase by 10%, 10%. If labor and capital are increased by 10% or 20%, whatever it will be, labor and capital both will be same, proportion is same. Production will also will be 100 to 200, 200, 300. If labor is doubled, capital is doubled, then production will also be doubled. This is most called preferred condition. And most of the economists, in the analysis of their theory, they take the assumption that there will be constant returns to scale. इसमें कहीं कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं है. कांस्टेंट रिटर्न है तो जो लॉ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, यू कैन एक्सप्लेन वेल दैट लॉ. अब उसमें फ्लक्चुएशंस हो जाने का असर हो जाएगा तो वो आपको लेबर एंड कैपिटल जब कांस्टेंट है और प्रोडक्शन लेबर एंड कैपिटल डबल कर रहे हैं, प्रोडक्शन में डबल हो रहा है, तो सेम जो रेट आप बढ़ाए उसमें उससे उतना ही बढ़ा तो उसको कहा जाएगा लॉज ऑफ रिटर्न्स टू ए स्केल. मतलब पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल. क्या लिखा है हिंदी में? नहीं लिखी हो तुम, इंग्लिश लिखी हो. पैमाने का प्रतिफल वृद्धिमान. हाँ, शुरू वाला होगा वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, दूसरा हो जाएगा स्थिर पैमाने का प्रतिफल.
और तीसरा हो जाएगा हरासमान पैमाने का प्रतिफल। जैसे कोई बस है तो बस में ठीक है 10 आदमी खड़ा हो गया, मुजफ्फरपुर, पटना से मुजफ्फरपुर जो है 1.5 घंटा का है, तो गांधी सेतु पर बस को खड़ा थे तो बस को लगा ही चाहिए हमको बैठने का है, कहाँ है उसका, तो चढ़ गए तो सब आदमी बैठा हुआ है और हम खड़ा है, तो जो अपना टेबल था उनको वो दिया बैठने के लिए। हमें छोड़ो, जब तुम बोले झूठ बोल दिए, तुम बोलते नहीं रहता तो नहीं चढ़ते, तो चढ़ गए और खड़ा रहे। अचानक एक आदमी उठा और कहा क्या बैठ जाइए, मुड़ के देखे तो 1984 में वो हमारे यहाँ बीपीएससी पढ़ा था और वो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, और उसके साथ एक क्लर्क भी था। तो क्लर्क नहीं उठा, उसको क्या मतलब है, तो उसका ऑफिसर खड़ा हो गया, अब हम बैठ गए तो क्लर्क बैठ सकेगा, तब क्लर्क का सर आप बैठ जाइए ना, अपना जो उसका बॉस था तो बैठाया था, दोनों बैठ गए और क्लर्क खड़ा रहा, तो लोग खड़ा ही रहा तो सब उतरेगा। ऐसा बहुत समय होता है, स्टूडेंट को पढ़ाया चला गया, उसका उससे भेंट नहीं होती है, कि कहीं भेंट होती है दूर से पहचान जाते हैं। जमशेदपुर जा रहे थे तो सोए हुए थे सीट पर, स्लीपिंग में था। मॉर्निंग के समय में जब पहुंच रहे थे तो देखिए कि एक आदमी बतिया रहा था कि रांची में था पोस्टेड किया जयपुर में, कि झारखंड का सरप्लस बजट पारित किया है। ये गलत बात है। सरप्लस क्यों किया तुम? उस पैसे को खर्च करते हो, झारखंड को डेवलप करते। एक कान में हमको आवाज दिया तो उठ के बैठ गया, लेकिन तो लगता है इकोनॉमिक्स का ही आदमी है। और वो बोलता था किसी किसी को बोलने से मुंह से था थूक निकलता है, हैबिट है उसका, बचपन का एक बात। तो देखे, उठ के झाके देखे कि बोल रहा है जो आदमी, उसके मुंह से थूक निकल रहा है। चेहरा देख के हम पहचान गए। 1979 में वो हमसे पढ़ा था और सेल टैक्स कमिश्नर है, वही जा रहा था, उसका ट्रांसफर हो गया था रांची से यहाँ देवघर। तो हम उतरे तो वो हमको नहीं पहचान पाया, क्योंकि हमारा चेहरा पहले से कुछ बदल गया था या वो सोचा नहीं होगा। तो हम अपने वाइफ को कहे कि देखो ये वही लड़का है जो हमारे यहाँ आया था, बाहर बरामदा पर 2 दिन तक ले बैठा रहा, आके बैठता था, हमसे भेंट नहीं होती थी। सिस्टर की शादी में हम इंगेज थे। सो इससे टैक्स में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हुआ था, अभी प्रमोशन होकर बड़ा पोस्ट पर कमिश्नर हो गया। तो बोले आप पहचान रहे? पहचान ही रहे हैं। उसके मुंह से थूक निकलता तो देखिए उसे निकल रहा है, जो बोलता था ऐसे ही बोलता था। अचानक हम घूमे उसके और कैसो, एकदम घबरा के देखा, कहा प्रणाम सर। वो भी मेरी आवाज को पहचान गया है। और उसके बाद देखो, उस समय ट्रेन में जो चलते थे तो वीआईपी रख के वो ताला लगाते थे सीकड़ी में, सीट के नीचे में वो कड़ी रहता था, एक अपना चेन ले जाके बक्सा में आगे का रहता, फंसा के उसमें लटका के ताला बंद कर, इस सोच में कि ताला बंद चोर नहीं ले जाएगा। अरे चोर आएगा तो ताला क्या काट के ले जाएगा, लेकिन ऐसा करते थे कि आमतौर पर कोई खींचेगा नहीं। तो उसको बोले कसो जरा सा ताला खोल दो, तो चाबी दिए। झुकने में हमको दिक्कत थी, तो हाँ सर। अब तो उसका क्लर्क जो है कहा कि सर नहीं हमको, बैठो तुम। मेरे सामने घुसा, ताला खोला, बक्सा बाहर खींचा और कहा कि सर हम नीचे उतार देते हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो उस समय लगा कि पढ़ाना जो है कितनी अच्छी बात है, गुरु शिष्य की परंपरा। वैसे तो फेसबुक पर पूर्णिमासी की क्या होता है, गुरु पूर्णिमा, खूब आता है फोटो, कोई कोई सेम फोटो आता है कि टीचर को झुक के प्रणाम कर रहा है, उसे बात दे रहा है। लेकिन रियल सेंस में टीचर अगर उसको पढ़ाया हुआ है तो जब कभी भी देखेगा तो शायद वो इग्नोर नहीं करेगा।
इतना पर्सनालिटी जो है अभी भी बचा हुआ है। तो कहते हैं कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हम लोग जान गए कि जितना बढ़ाएंगे उतना हमारा बढ़ जाएगा। और ये अब लास्ट हमारा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये बड़ा ही दुखदाई है क्योंकि ये लिमिट में आ गया। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इकोनॉमीज जो है इकोनॉमी जो है ग्रेटर है किससे, इक्वल है, इक्वल है दिस इकोनॉमी से। ये दोनों क्या है, इक्वल है। पहले वाले में इकोनॉमी ग्रेटर था, therefore there was increasing returns to scale। लिख लो, in this case there will be equality between increasing in economy, equality between economy and diseconomy of scale, economy and diseconomy of scale। Diminishing it, बियरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम है, तुरंत रिएक्ट करेगा, मारपीट कर देगा। उसी एनर्जी को कोई कोई प्रोडक्टिव में लगाता है कि हमको आईआईटी निकालना है। ये कौन, सीजीएल की कौन होता है, वो निकालना है, या रेलवे वाला को कौन परीक्षा होता है। तो देखते थे मोस्टली लड़का वही रेलवे वाला का तैयारी करता था। मुखर्जी नगर में मेरा भी ऑफिस था, तो जब गुजरते थे कार से तो देखते थे कि हर 2 दुकान के बाद एक नाम लगा हुआ है, वो कोई टीचर वहां का था, उसका तैयारी करते, पूरे साल में उसका पंपलेट है ये। और हर लड़के के भीतर क्विक नौकरी हो जाए, वो वाला रेलवे वाला कि 1 साल मेहनत किया तो हो गया, या डिफेंस उफेंस सबका रहता है, देखते हैं। हमारे यहाँ से भी एक लड़की अभी कंप्लीट की है, उसको पोस्टिंग हो गया तो कंप्लीट की, रांची में पोस्टिंग हो गया डिफेंस में, क्वार्टर देगा रहने का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो कहता है कि यूथ का एनर्जी बहुत है, that must be channelized into productive way। जो ऐसा कर देता है निकल जाता है, बहुत मेहनत करता है। बिहार के लड़के में जो मेहनत होती है, हम तो 50 साल से देख रहे हैं, और उसके पहले 10 साल हम बिहारी थे तो 12 घंटा पर डे पढ़ते थे। सोचते थे कि गरीबी का दुष्चक्र जो परिवार में है कैसे तोड़े। क्यों? क्योंकि उस जमाने में 60 सब में हर माता पिता का 5 गो 6 गो बच्चा रहता था। हम लोग के जमाने में कोई भी माता पिता था ना, तो उसको 4 गो 5 गो से कम बच्चा नहीं रहता था। हमारे जमाने में आया तो 2 बच्चे हो गए, और अभी तुम लोग का जमाना जो आया है उसमें 1 बच्चे या कोई बच्चा नहीं, एडॉप्ट कर लेंगे। यो तो सुन रहे हैं चेंज। लेकिन चेंज जो है, डेमोग्राफिक चेंज जो है, वो सबके साथ नहीं हो रहा है। अभी भी जो लोअर इनकम ग्रुप का है उसका वही टारगेट है, 4 या 5 बच्चे हो तो उसका हर बच्चे का इनकम जोड़ देगा तो टोटल इनकम बढ़ जाएगा। और जिसको 1 बच्चा है और वो इंजीनियर है या आईटी है तो उसका लार्ज अमाउंट हुआ, एक ही में लार्ज अमाउंट उसको मिल गया, या 5 को जोड़ करके मिलेगा तो उसका
इनकम बढ़ जाएगा। कि सोच ही उसका ऐसा है। अभी सफाई कर्मी जो है उसको 4 चिल्ड्रन, नीचे कुक जो है उसका भी 3 चिल्ड्रन है। तो 4-5 से कम नहीं किसी में। जो लोअर इनकम ग्रुप का है उसमें नियम है मोर चिल्ड्रन मोर टोटल इनकम, दे आर नॉट कंसिडरिंग मार्जिनल इनकम। हम लोग क्या मार्जिनल को देता है, एगो है तो वही मार्जिनल है और उसका इनकम है 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा IIT सबका जो है 2 लाख का पैकेज पर मंथ। उसका सोच देखे, उसके जाके बेंगलोर में मकान देखे, सब चीज देखे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। वो इंग्लैंड चला गया, फिर इंग्लैंड से US चला गया, US से फिर कहाँ चला गया। जो करना है कर लो, रेंज तो वही 60 ईयर्स है। ये तो कहिए कि अभी हम लोग के यहाँ 70 ईयर्स हो गया है एवरेज एज, तो हम लोग का 70 है, अमेरिका का है 95। वहां के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे ओबामा, 3 दिन रह गए थे, 3 दिन 3 रात, तो उनके जीवन का 9 दिन घट गया। जो कैलकुलेट करके निकाल दिया कि जो अब 3 दिन रह गए इंडिया में, यहाँ का जो वातावरण है तो उसमें आपका घट जाएगा 95, नहीं आप 3 साल पहले साफ हो जाइए। अब सोचिए हम लोग हैं तो हैं, जो ऑक्सीजन है वही लेंगे। दिल्ली का जो बात कर रही हो, वर्चुअली दिल्ली में हमको बहुत प्रॉब्लम होता था। एक तो कि ऑक्सीजन वाला भी कर रही हो, और इतना क्राउड है ना, हालांकि उबर ये सब इतना फाइन सिस्टम है कि बहुत कम रेट में बैठिए गाड़ी में आपको पहुंचा देगा, लेकिन क्राउडिंग इफेक्ट बहुत है। एक आध बहुत ऐसा मार्केट था कि उसमें गए तो लगा कि कितना आदमी उसमें है दिवाली वाली के समय में। वैसा यहाँ भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं है, यहाँ भी रोड जो छोटा है उसको भरा रहता है। हमारा कहना है कि डिस इकोनॉमी जो है वो कहीं भी स्मॉल स्केल पर होगा तो बेयरेबल है, लार्ज स्केल पर आप कीजिएगा। अभी क्या कर दिया है, 1-1.5 लाख में हवाई निकलता है, बेरोजगार को दे दिया हवाई का क्या खासियत है, दाम क्यों कम है, एकदम हल्का है वो, और लोहा के बीटूट से बनाया हुआ है, और उसमें शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। तो सारा शॉक जो है, जो बैठा हुआ है उसी का रीढ़ का हड्डी बर्दाश्त करेगा। अब आपका हड्डी किस लेवल पर है, क्रैक कर गया तो दूसरा बीमारी हो जाएगा। अचानक गड्ढा आ गया, अचानक ऊंचा आ गया, तो ड्राइवर को नहीं होता, क्योंकि ड्राइवर के ठीक पीछे बैटरी रहता है, तो वहां लोड है। पीछे जो बैठता है वहां हल्का है नहीं, ये क्या करते हैं शॉक एब्जॉर्बर। पहले का जो ऑटो था उसमें शॉक एब्जॉर्बर था, उसका कॉस्ट ज्यादा है, 4 लाख 4.5 लाख है। ये सुनते हैं कि 1.5 लाख में तैयार हो जाता है। उसके बाद घुमाने वाने उलट भी जाता है, कोई देखते हैं उसका। तो कहने का अर्थ है कि क्वालिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो 3rd स्टेज में पहुंचने के बाद आप कहां पर रुकिएगा, जहां आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। और केवल इकोनॉमी नहीं, केवल डिस इकोनॉमी हो जाएगा, तब क्या करेगा, बंद करना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी जो है सो फास्ट करते थे 21 दिन। आम आदमी 21 दिन फास्ट करेगा तो मर भी जाएगा। सो सरकार पुलिस पकड़ के जबरदस्ती मुंह में ये सेब का या अंगूर का रस पिला देगा, नारंगी का रस पिलाता, नारंगी का जूस का पिला देगा। लेकिन गांधी जी फास्ट जो है तो लाने के लिए नेहरू जी कहते थे छोड़ दो बाबू, जान चलाएगा चलाएगा। लेकिन आप हम जो कहते हैं वो करो। तो कहता है कि डिस इकोनॉमी इज इनस्केपेबल, माने वो छूट नहीं सकता है, रहेगा ही। शुरू में भी था, लेकिन वहां इंक्रीजिंग
था आपको इकोनॉमी, इकोनॉमी ज्यादा था, डिस इकोनॉमी कम था, तो आराम से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल चला। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में इकोनॉमी और डिस इकोनॉमी दोनों बराबर है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। जितना लेवल बढ़ाइएगा, कैपिटल बढ़ाइएगा, उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा। थर्ड स्टेज जो है वो समझिए कि यू आर रीचिंग टू द गोल। अब यहाँ जो प्रोडक्शन होगा इसके बाद आप आगे का नहीं बढ़ सकते हैं। कितना इकोनॉमी को, कितना लॉस को बियर कर सकते हैं। यू कैन ट्रांसफर दिस इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस, वहां से मेकअप कीजिएगा। लेकिन प्राइस को कैसे बढ़ाइएगा, डिमांड पर असर होगा। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, कंज्यूमर में लीव दैट। बहुत आदमी को देखते हैं गुजरता है नारियल का वो जो काट के रस पिलाता, पानी पिलाता है, तो साउथ उथ में देखते थे 10 रुपया में देता था। हमको जैसे याद आ रहा है 10 रुपया 12 रुपया, यहाँ 50 रुपया। हॉस्पिटल के पास है तो 50 रुपया। हॉस्पिटल में आपका आदमी भर्ती है और डॉक्टर लिख दिया कि पानी नहीं पिलाइए, नारियल का पानी पिलाइए, तो आप खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है, लेना ही है आपको। तो कहता है कि कांस्टेंट रिटर्न को इकोनॉमिस्ट लोग अच्छा माना, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न विल डिसअपीयर एंड कांस्टेंट रिटर्न्स विल कम। और कांस्टेंट रिटर्न से डिमिनिशिंग रिटर्न में जाने में बहुत तरह का प्रॉब्लम उठता है। तो बहुत सारा इकोनॉमिक्स का थ्योरी है जिसका एजम्पशंस है। एजम्पशंस क्या है कि देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो बहुत तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। यहाँ गुजरात में चल रहा है ना जी। गुजरात में एक जगह है द्वारिका, वो हिंदू में धाम में भी आता है, वो द्वारिका धाम। वहां गए हुए थे तो टाना वाला कहा कि चलिए ना जगह आपको दिखा देंगे जहाँ की आज मंदिर आप देख रहे हैं, एक डेट बताया कि इस डेट के बाद वो मंदिर वहां नहीं रहेगा। हम क्या कह रहा है, ठीक है बैठ के हम सोचे कि बहुनी नहीं कराता है, कुछ नहीं कराने की उसको आगे पैसा मिलेगा। हम बैठ गए, हम लोग, हम थे, हमारा लड़का था, ले जाके समुद्र के किनारे एक जगह रोक दिया, कहा कि देखिए हम क्या, देखिए मंदिर है ना, तो समुद्र में एक मंदिर था शंकर भगवान का, साफ दिखाई दे रहा कि मंदिर है। अब बहुत लंबा नहीं था लेकिन तो भी अच्छे साइज में था। कहा कि डेट बताया इतना तारीख को आइएगा, तो मंदिर में नजर नहीं आएगा। क्या है, तो समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो उसी का समय रहेगा और पूरा पानी यहाँ पड़ जाएगा और ये डूब जाएगा मंदिर। अच्छा। और कितना तारीख को तो बताया मुझे कि तुम आ जाओगे मेरे होटल में, चलेंगे। ठीक उस तारीख को आ गया। वो जान रहा था कि पर्यटक है, हम लोग वेट करेंगे 8 बजे आइए चलेंगे। तीसरे दिन या चौथे दिन बोला, उसका आया, ले गया, वहां देखे तो देखिए कहीं कोई चीज नजर नहीं आ रहा है, सारा डूब गया पूरा पानी से। बड़ा यूनिक लगा। कहा कि फिर 15 दिन के बाद आइएगा तो पानी सड़क जाएगा और फिर मंदिर नजर आएगा। पूर्णिमा का दिन होगा, और जो दिन रहा हो तो पूर्णिमा में ज्वार भाटा आता है। पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है। हाँ, तो पूर्णिमा के दिन ज्वार भाटा आता है तो हम बोले कि अब तुमको दोबारा ये तो देख ही लिए, डूब गया, अब हट गया, ये देखने के लिए थोड़ा रुकेगा, हम तो आगे बढ़ेंगे, सोमनाथ चले जाएंगे। मान लिए जंक्शन की ठीक है, जैसे फिर मंदिर दिखाई देगा, तो भी साइट ऑफ वहां बहुत सारा चीज देखने का। तो लेक्चरर में जो आए हम, बड़ा कंफर्टेबल था, पटना यूनिवर्सिटी में थे और उससे बड़ा ही अराजकता का पीरियड था। अराजकता का मतलब है कि हर समय स्ट्राइक होता था, 3 महीना स्ट्राइक, किसका, नॉन टीचिंग स्टाफ का। फिर 3 महीना स्ट्राइक स्टूडेंट कर दिया कोई इशू लेके, दोनों शांत हुआ, तो 3 महीना टीचर का स्ट्राइक। 3 साल में
9 महीना जो है स्ट्राइक से डिस्टर्ब, 3 महीने भाई, और ऊपर से दिल्ली से चिट्ठी आई कि आप लोग लिख के भेजिए कि कितना दिन पढ़ाए, कम से कम 90 डेज होना चाहिए। तो उस 3 महीने में एतवार भी था, कुछ छुट्टियां भी थी, और क्रिसमस का भी पीरियड छुट्टी होता है, 90 डेज पूरा नहीं हो रहा था। तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम लोग बढ़ा के उसको पूरा किए, तब रिपोर्ट किया। हमें दिमाग में आया कि जब यहाँ स्ट्राइक हो रहा है तो चले जाएंगे दूसरे स्टेट में और उसका प्रबंध करें, तो ब्रेन भी खुलेगा और रियलिटी हमको नजर आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस ये। तो इससे हमको पढ़ाने में सुविधा होगी कौन स्टेट में क्या है नहीं। विदेश भी गए, जैसे कनाडा गए तो कहा कि चलिए यूएसए में छोड़िए, पहले कनाडा पूरा घूमने दीजिए। जैसे कन्याकुमारी से चले जाओ जम्मू कश्मीर, तो पूरा लगभग इंडिया हो जाएगी। तो उसी तरह से टोरंटो से गैस पर, और उसी के बीच में क्यूबेक है, एडमिंटन है, सब पड़ रहा है, और सब गुरु के उतर उतर के घूमते, 1 महीना में लोग सब घूम के भाग आए। और जो आदमी मेरे साथ था वो मेरा ही बेटा था, कहा कि डैडी हम तो खुद नहीं घूमे हुए हैं, हम तो यहाँ एकदम मशीन की तरह जाना ऑफिस और आना, यही है लाइफ में। और छुट्टी ले लिया था कि फादर को ट्रीटमेंट कराना है, तो डरे किसी से बात उत नहीं करता था कि ट्रीटमेंट कराना है, तो इसमें बातचीत क्या करना है, और ट्रीटमेंट ही हो रहा है। भ्रमण करा के हमको स्वास्थ्य को ठीक कर दिया। मैं जैसपर में जैसे बर्फ का पूरा पहाड़ है, तो वो कश्मीर की तरह है। तो इसलिए कहता है कि इकोनॉमी में डिस इकोनॉमीज पसंद नहीं करता है। अगर डिस इकोनॉमीज के बराबर इकोनॉमीज भी हो जाए तो दैट स्टेट इज perfectly optimal. Most of the economists in micro and macroeconomics, assumptions of everything there is assumptions. In assumptions, number 1 is perfect competition. Number 2 is constant returns to scale. Number 3 is full employment. Number 4 is free trade, laissez-faire. ये फिक्स्ड assumptions है। याद रखो कि कोई क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन में ये फिट हो जाएगा, ये 4 बातें। अब इतना बात सब लिखेगा। अगर आप 80% चाहते हैं तो कांस्टेंट रिटर्न्स में किसको दिखला देना चाहिए? कॉप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन को बीच में। क्लियर है बात? ऐसे सारा क्लियर हो गया, लैंग्वेज में हो गया, डायग्राम में हो गया। बीच वाले में क्या करेंगे हम लोग? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि हम आपको बताएं कि हर थ्योरी का एजम्पशंस क्या रहता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो इसको हम लोग कॉप डोगलास प्रोडक्शन फंक्शन से दिखलाते हैं।
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, केवल डेल क्यू बाई डेल एल है, तो हम लोग को क्या करना होगा, डेल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है इक्वल हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल एल, यही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। मतलब क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे एल के रेस्पेक्ट में, एल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सब उतर जाएगा, लैम्डा उतरेगा, के टू द पावर बीटा उतरेगा और म्यू उतरेगा। क्रिया किसके साथ होगी, एल के साथ होगी, विथ रेस्पेक्ट टू एल है। क्रिया क्या है डिफ्रेंसिएशन का, कि पावर उतर जाएगा नीचे और ऊपर में पावर -1 हो जाएगा, है ना, पावर -1 हो जाएगा। इसी को मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर कैपिटल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, अब डेल्टा के लेंगे तो के वाले में देखिए क्या होगा, लैम्डा चुपचाप उतर जाएगा, एल टू द पावर अल्फा उतर जाएगा और बीटा नीचे आएगा और फिर के बीटा -1 होगा और म्यू होगा। तो ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। है ना, जी। और पावर को खोल देंगे, एल टू द पावर अल्फा एल टू द पावर -1 लिखेंगे, के बीटा। म्यू नहीं लिखेंगे, म्यू तो कट गया ऊपर ना, म्यू 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 और लैम्डा खत्म हो गया, हाँ नहीं काटी, काट दिए और नीचे काटे। के बीटा पावर फिर के -1 का पावर, ये हो गया। अब यहाँ आप देखिए, वहीं पे तोड़ दीजिए, के बीटा पावर लिखे तो एक और लिख दीजिए के -1 पावर। हाँ, उसको मिटा के और -1, हाँ के -1 पावर। अब क्या हो जाएगा, ये हाँ एल अल्फा कट जाएगा, ये एल जो है कट जाएगा, के बीटा ये भी कट जाएगा, तो अल्फा एल का पावर -1 बचेगा, अल्फा उधर का और एल का इधर पावर का बीटा, हाँ, और इधर क्या बचेगा, एल का पावर -1 के का पावर -1, एल का पावर -1 के का पावर के का -1। पावर -1, इसी को पलट दिया जाएगा तो के ऊपर आ जाएगा और एल नीचे हो जाएगा, और इसी को माइनस से प्लस हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा
K by L. अल्फा एंड बीटा, के बाई एल। हाँ, तो इसको बीच में कांस्टेंट क्लास टू स्केल में आप यूज कर सकती हैं, है ना। अल्फा बीटा इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा अल्फा इलास्टिसिटी ऑफ लेबर है, बीटा इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल है। तो वहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल, के बाई एक है ना, तो फाइनली क्या हो जाएगा, अल्फा 1 है और बीटा भी 1 है। जब बढ़ेगा तो के बाई एल बढ़ेगा, जितना एल बढ़ेगा उतना के बढ़ेगा। सर अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 1 है। हाँ, ऊपर लिखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 वहाँ ऊपर लिखे हैं तो। कांस्टेंट रिटर्न का ना। अच्छा, और ये दूसरा सिचुएशन है, इलास्टिसिटी है इसलिए 1 लिखे, वो अलग बात है। हाँ, वो दो अलग, बहुत वो कंफ्यूजन। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के लिए है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में 1 रहेगा दोनों, वो तो आप प्रूफ हो गया ना, अल्फा भी 1 आया और बीटा भी 1 आएगा आपको। लेकिन जब आप शुरू में लिखे थे ना यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कांस्टेंट, तो यहाँ लिखे थे अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा 0 लिख दिए थे। उसके बाद फिर अभी दोबारा लिखे तो 1 लिख दिए हैं। कहाँ पर? यहाँ जैसे अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे 1 लिखे है ना, इस ये एक बार पहले भी लिखे हैं आप शुरू में, तो वहाँ 0 लिख दिए थे। 0? हाँ नहीं, मिस्टेक है, उसको मोर देन 1 इक्वल टू 1 लेस देन 1। अच्छा 1 होगा, है ना। ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न में अल्फा प्लस बीटा जो है जोड़ने पर 1 होगा। ठीक है सर। ग्रेटर देन 1, अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1। कांस्टेंट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। डिमिनिशिंग रिटर्न होगा अल्फा एंड बीटा लेसर देन 1। उसका पावर जो है वही इलास्टिसिटी है ना। हाँ। That's all. Thank you.